So what are the services that you're providing here? So we do anything which is any kind of a skin, hair, venereal like STD diseases, and also something which is called as anti-aging, which is quite in, fillers, Botox, you name it, we have it. So most of my patients usually come with the concern of acne scars, pigmentation, Right. aging, fine lines, keloids, psoriasis, vitiligo. There are a lot of diseases that we treat. Hair loss, hair thinning, baldness, alopecia areata. There are a lot of problems that we treat. Right. So when you say you do customized plans for people, what exactly do you look into? See, I believe in giving results in less number of sessions. Oh. So that's my USP, you can say that. And also I believe as the kind of environment we live in Delhi specifically, with the kind of stressful environment we are in, both related to professionally as well as environment wise. So I believe in maintaining, skin is the largest organ, right? It shows what is happening inside. So Right. I love to treat my patients holistically, wherein they are improving internally and externally we are improving as well, so that the results stay for a very, very long time. So which includes your nutritional levels is okay or not, you're following the skincare as per your skin type. If certain treatments are required, we do the treatments and put you on a maintenance part, which is like maybe one Medifacial once in a month or once in 2 months, whatever is convenient for you, so that we all age. Of course we have to age, but then we can age gracefully, is something which I believe in. You used a term called as Medifacial. Yes. I don't think a lot of us have heard about it. Would you want to elaborate on what exactly is it? Yeah, so basically Medifacials are medical grade facials which are customized as per your needs. If you have a pigmentation, I'm going to customize a plan according to you. If you have an acne prone skin, it has to be customized according to you. So now these days we are not into salon based facials. Of course, if you want relaxation, you want massages, you can very well go to the salon, haircut and everything else. But then if you want cutting edge treatments which are result oriented, then therein the Medifacial comes in. ठीक है. So Medifacials में बहुत सारे treatments आता है. There is Instaglam-HD, there is Hydrafacial, आपने सुना होगा. Right. And something called as Hollywood Peel, there is Oxygenio. So we have variety of Medifacials which are again customized as per your need. And even if I'm doing the same treatment for you or me, the steps would be different. Here the customization and the result orientation comes in. Interesting. So where does this experience come from? Where all have you worked? Okay, so my journey started from, of course, I'm a postgraduate in dermatology for 3 years, and then I worked in a government hospital wherein I was exposed to all the skin conditions like psoriasis, vitiligo, जो general clinical दिखती हैं. Right. उसके बाद I jumped into aesthetics wherein I started with the Medlings and then Isaac. And then Kaya, that's when I learned a lot of things from different experiences. I also gained a lot of experiences in a way to know what treatments work, what do not work, how many treatments. You learn with your experiences. Right. So the best of the experience is something I've gotten in here. Like we have been working since almost like 1.5 years, and thankfully grateful to my patients. It's been like wonderful experience altogether. I have made a lot of friends during this journey, wherein my patients have become my friends, and it's a very beautiful journey. I think it's a great thing to say for a doctor that a lot of patients have become your friends. Yes, absolutely. That shows the kind of treatment that you actually give out to your patients. I think patients, अभी जितना मर्जी commercialize हो जाए, patients usually need to trust their doctors. They do. है ना? They usually if they're connecting with you, that's how the trust has to be built up, because not everyone will understand what I'm doing right now, what they can achieve, but then that's why I said it's like a journey. I need to make them understand, they also need to understand what they're going through. So I always try to teach my patients in a way they can follow it up. मतलब 6 months के बाद, जैसे अगर आप you are undergoing some kind of a journey, you should understand what suits you better, so that even if you're picking, there is a conscious picking that is happening and you're not wasting your money. Right. From working at other people's clinic, how did you transition into starting something of your own? I always wanted to have something of my own. Specifically, why? Because I have suffered from acne myself. I am still an acne survivor because I have PCOS history. Not everyone understands the kind of trauma or psychological stress or underconfidence, all these basic things. It's very basic. Acne is a very, very basic thing. Pigmentation is a very, very basic thing. It might not be too much stressful for some people, but most of what people have what I've seen is it's too much of stress for them, too much of consciousness that brings in. But it is. Right now, since the last 5 years, what I've seen is the technology is also advanced. Treatments are actually available, and I guide each and every one of my patients. Acne is treatable,
जैसे ही हो आप वहीं पे आप उसको ठीक कराइए, बिकॉज एक बार जब स्कार हो गया ना तो स्कार कम्प्लीटली नहीं जाता है, ठीक है, इट स्कार्स यू. ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल, वी कैन इम्प्रूव इट बाय 80 to 90%, बट देन इट्स नॉट गोना बी लाइक योर नॉर्मल स्किन. सो ये मेरी एक गाइडेंस पेरेंट्स के लिए भी रहती है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने भी अपने टाइम पे ऐसे किया था कि ये तो एक्ने है, एज रिलेटेड, अपने आप ठीक हो जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता है. You need medical help यू नीड for it. मेडिकेशन इन द राइट टाइम, बिकॉज द अर्लियर आपको स्कार जितने नए होते हैं उतना अच्छा रिजल्ट आता है. द मोर यू डिले, योर स्किन विल नॉट बी हाउ इट इज लाइक अर्लियर, right. एंड सेकेंडली इट्स एक्ने स्कार ट्रीटमेंट इज एक्सपेंसिव, यू रिक्वायर लॉट ऑफ सेशंस. सो एक्ने का ट्रीटमेंट बहुत ईजी होता है, एक्ने स्कार का लंबा भी होता है, और थोड़ा सा यू हैव टू अंडरगो लॉट ऑफ डाउन टाइम एवरी नाउ एंड देन हैपनिंग. सो treating an acne is very very easier than treating an acne scar, is what I tell everyone. How does one treat acne initially? Lot of things. Especially, I think 10 to 13 years old girls usually suffer from it. That's because see, उस समय hormones का changes आता है body में, तो girls usually undergo 3 times changes in the Right. body. One is at the menarche जब उनका puberty start होता है, second is at pregnancy, and third is at menopause. That is when a bout of acne is usually seen. So what I generally suggest is maintain a healthy lifestyle, जो आप अपनी तरफ से कर सकते हैं. Maintain a healthy lifestyle wherein you're not having too much of dairy products, too much of sugar, wherein I mean high glycemic food and fruits and vegetables also, जो एकदम से स्पाइक करते हैं आपका शुगर, ठीक है, तो उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का भी चांसेस होते हैं. एंड थर्डली ऑयली फूड, आप ये अपनी डाइट में थोड़ा सा इनकलकेट कीजिए. प्लस बाकी आई वुड से जस्ट अगर आपको जस्ट फॉलो बेसिक स्किन केयर वेर इन यूजिंग द राइट फेस वॉश फॉर यू, राइट मॉइस्चराइजर फॉर यू, राइट सनस्क्रीन फॉर यू. अगर फिर भी हेल्प नहीं हो रहा है एक्ने से, कम एंड सी योर डर्मेटोलॉजिस्ट. डू नॉट वेट फॉर इट टू improve it on its own. It doesn't happen Yeah, it does. most of the times. Yeah. So this also brings me to the next question, wherein we want to know how are you different from the so many skincare clinics that we have all around. You are a dermatologist by Yes. education, Yes. but then we do have a lot of skin clinics mushrooming all across Delhi Yes. NCR. Yes, I think our organization IADBL, which is specifically Indian Academy of Dermatology and Venereology, we are trying to fight the quackery. We are, I think, taking baby steps. It's going to take time, but this is, I would want to the patients also. You should know your doctor. That's a very very important. Do your study and then reach out to a doctor, Right. because you should not. I'm telling you, treatment does work, but sometimes, unfortunately, if you land up going to a place wherein there are no ethical practices happening, not a trained person sitting there, you can actually be very what do you call it, unsatisfied with the results, plus also you will burn a hole in your pocket, ठीक है. तो इसीलिए always know that if you have a skin concern, go to a dermatologist. हड्डी का अगर प्रॉब्लम होता है, go to an orthopedician. डेंटल प्रॉब्लम होगा तो आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे, बट अगर स्किन का प्रॉब्लम है, go to a dermatologist. We are trained specifically for skin. We have read 3 years lot of diseases specifically related to skin. Right. So देखिए, it might seem easy, but कई बार ना केसेस खराब हो जाते हैं. That is where the importance of a dermatologist comes in, because we know how to handle each and every kind of a problem. Okay. True. And also, the kind of machinery that we saw here, Yeah. it seems very advanced. Yes. What's the difference here? So the thing is, with all the experience, I have realized that there are certain kind of machines which give you better results. As I've told, my policy is to give the results in less number of sessions. ठीक है? So that obviously everyone is busy in their life. I would not want you to come here every now Right. and then for the treatment. आप जल्दी से, I would want कि मेरे patient जल्दी से maintenance में आ जाए, ठीक है. वो मेरे लिए भी it's a plus point for me. Right. Also, so basically you have to see that if the machine you are undergoing laser or whatever, it has to be US FDA approved. When I see it's US FDA approved, it means उसमें बहुत सारा study हुआ है कि वो machine safe है. अगर वो जिस wavelength की है, जिस energy की है, वो उतने ही deliver करती है. That is where the price point also comes. आप देखेंगे बहुत सारे clinics से इतना variable range आता है, 3000 का भी होता है, 50,000 की भी चीज़ें होती हैं. Price point comes only, see the thing is, आप खाना ढाबे में भी खाते हो, 5 स्टार में भी खाते हो, आप ऑल्टो भी चलाते हो, मर्सिडीज भी चलाते हो. दिस इज द डिफरेंस इसमें भी, एज सिंपल एज दैट. True. तो बेसिकली जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा. बिल्कुल बिल्कुल. और मैं ये नहीं कहती हूँ एकदम ही हाई एंड में जाओ. यू हैव टू बी स्टे समवेयर इन मिडल, सो दैट यू आर गेटिंग व्हाट यू आर पेइंग फॉर. Understood. Now talking about your entrepreneurial journey, do you remember the time when you actually finalized, okay, now I'm going to start something of my own? How was the feeling? How did you start it? Okay, so basically I always, from the very beginning, I knew I'll open my own clinic. But then I was waiting for a time, I get married, I know where am I settling in. That's when we decided, me, Dr. Ashish, he's actually from Hisar, but then we finalized, me being a Delhi girl, I've always wanted to stay in Delhi.
ठीक है, so we finally put our foot down. I saw the place. This is the first place I saw, like for my clinic, and it was like the first and the last choice. You know, depending upon, Right. because I have to see all the feasibility, reachability. It's a central Delhi, location. Plus there is parking and everything. So in my clinic, everything has been thought about regarding the patient, and that comes with experience. Because you know me, I put myself as a patient, and then I've designed everything. Secondly, it's difficult turning from a doctor to an entrepreneur. From getting the salary to giving the salaries, it's a huge responsibility. It truly is. It is, and my work per se is, since it's my passion, it is never difficult for me. I love, no matter how many hours I'm putting in, I am not tired. But when it comes to management parts, handling people, handling everything, it's difficult. It takes a toll on you, definitely. So who were the first people who came in to your support when you shared your idea? My husband, my father, my parents, and my in-laws, all of them have always been supportive. Amazing. So another problem that a lot of us face is hair loss and of course, you know, thinning of hair. And people like me suffer from gray hair. How do we deal with it? Okay. हाँ, स्किन केयर तो इज़ इम्पॉर्टेंट. हेयर केयर के लिए भी बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास. बट देन व्हाट आई से इज़, हेयर केयर में ना यू हैव टू बी वेरी क्विक इन ट्रीटिंग. बिकॉज एक बार हेयर रूट आपका चला गया तो वो जल्दी नहीं आता है. बिकॉज आफ्टर अ सर्टेन एज हमारे पास नए हेयर नहीं आते हैं. वट एवर हेयर आर लेफ्ट आउट विथ, उसी को हम ग्रो कर सकते हैं या थिक कर सकते हैं. सो यूजुअली हेयर लॉस में 3 तरह की प्रॉब्लम्स होती है. एक होता है हेयर लॉस, एक होता है हेयर थिनिंग, और थर्ड होते हैं जो पैचेस दिखते हैं आपको गोले, लाइक यू नो राउंड थिंग, जिसको बोलते हैं कीड़ा लग गया, एलोपेशिया एरिएटा बेसिकली. तो हेयर थिनिंग, जब हेयर फॉल होता है, विच इज कॉल्ड एज टीलोजन एफ्लूवियम, इट इज करेक्टेबल. उसमें आप कभी गंजे नहीं होंगे. आपको हेयर फॉल चाहे जितना मर्जी हो रहा हो, लेकिन आप उसमें गंजे कभी नहीं होंगे. ये अंडरस्टैंड करना. और इट्स अ वेरी ग्रेटफुल थिंग दैट यू हैव, यू नो, टीलोजन एफ्लूवियम एंड नॉट द थिनिंग पार्ट. Because you know, everyone wants a good amount of hair on the scalp, no matter it's a male or a female. ठीक है, मेल्स के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, और किसी चीज़ के लिए कॉन्शियस नहीं होंगे, लेकिन हेयर के लिए बहुत कॉन्शियस होते हैं. ठीक है. सो इनके इसका यूजुअली हेयर लॉस के कॉजेज होते हैं. आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है, आपको स्ट्रेस हो सकता है, वो मेंटल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, कि आप ओवरवर्कड हैं, आप टाइम पे नहीं सो रहे हैं, या बीमार हो गए. तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका टीलोजन, मतलब आपके जो बाल होते हैं जल्दी से गिरने लगते हैं. इसको टीलोजन एफ्लूवियम बोलते हैं. इसमें जनरली हमको वट एवर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है उसको करेक्ट करना पड़ता है. सेकेंडली, जनरली अगर आपकी इलनेस है तो आप 3 मंथ्स के बाद देखोगे खुद ही रिकवर हो गया. एक केस होता है जिसमें क्रॉनिक टीलोजन एफ्लूवियम एक केस होता है, विच आई कम अक्रॉस अ लॉट. मतलब कि नो मैटर व्हाट यू आर डूइंग, आपकी साइकिल ही रेगुलेट नहीं हो रही है. तो हमारी हेयर साइकिल 3 मंथ्स की होती है, जिसमें एनाफेज होता है, जिसमें हेयर ग्रोथ है, टीलोजन होता है, इसमें हेयर फॉल हो जाता है. तो इस साइकिल को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है. तो वो एटलीस्ट इट टेक्स 3 to 6 months टू शो एनी काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द हेयर. सेकेंडली, टू हैव द हेयर ग्रोथ ऑल्सो. अब सेकंड कंडीशन होती है, इसको बोलते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया. वो मेल पैटर्न भी हो सकता है, फीमेल पैटर्न भी हो सकता है. मेल पैटर्न होगा तो यहाँ से आप गंजे होंगे और यहाँ से गंजे होंगे. फीमेल पैटर्न में आप देखोगे कि यहाँ से बाल जा रहे हैं आपके. इसमें 2 दवाइयाँ बहुत अच्छी काम करती हैं. You must have heard about it, minoxidil, और मेल्स के केस में finasteride भी. तो these all are DHT blockers. तो हमारे एक DHT एक हार्मोन है जिसका कुछ फायदा नहीं होता, लेकिन हमको हेयर थिनिंग दे देता है. तो इसमें बाल गिरता नहीं है, हेयर पतला होता जाता है. तो इसको पतला जब हो रहा होता है, अपने तभी की तभी यू हैव टू, यू नो, कैच होल्ड ऑफ इट एंड डू समथिंग अबाउट इट. एंड इसी के लिए हेयर में आजकल बहुत सारे ट्रीटमेंट्स भी आ गए, समथिंग कॉल्ड एज PRP, GFC, एक्सोसोम थेरेपी, रीजेनरा, स्टेम सेल थेरेपी, बहुत सारी थेरेपीज है. लेकिन अगर आपने इसको ठीक टाइम पे नहीं स्टार्ट किया थेरेपी, तो थेरेपी भी कुछ नहीं कर सकती है. ठीक है. बट टॉकिंग अबाउट रिजल्ट्स, आजकल ट्रीटमेंट्स जेन्युइनली अवेलेबल है, रिजल्ट्स आते भी हैं. द ओनली थिंग इज विद हेयर, यू हैव टू स्टार्ट एट द राइट टाइम. एंड व्हेन वी कम टू द थर्ड टाइप ऑफ हेयर लॉस, which is like a pathological hair loss, alopecia areata, उसके लिए आप अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करिए, like a dermatologist per se. And for people who see seasonal hair fall, especially in monsoon. देखो, अब मानसून में हेयर फॉल इसलिए होता है क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है. तो आपका हेयर में जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी. तो हेयर फ्रिजी होने लगता है, और फ्रिजी होने के साथ उसमें ब्रेकेज बहुत आ जाती है. सो व्हाट यू कैन डू अबाउट इट इज, एक मॉइस्चराइजर आप शैम्पू से पहले लगाइए, लाइक यू नो समथिंग लाइक अ कंडीशनर और हेयर मास्क. कीप इट ऑन फॉर सम टाइम एंड देन वॉश इट ऑफ. एंड सेकेंडली, व्हाट यू कैन डू इज, अपना डाइट में थोड़ा सा चेंजेस करिए कि इट शुड बी रिच इन प्रोटीन, आयरन, B12, विटामिन D3. ठीक है. एंड थर्डली, वन मोर क्वेश्चन यू आस्क्ड मी, अर्ली ग्रेइंग ऑफ हेयर. ठीक है. तो इसके 2 ही कॉजेज होते हैं. एक, आप में कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, मेड बी आयरन, B12, D3, जिंक. इसका टेस्ट कराओ. अगर ये नहीं है, ठीक है, तो आपको सेकंड कॉज कुड बी जेनेटिक, कि आपकी फैमिली में हिस्ट्री है. तो उसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, हमको न्यूट्रिशनल बैलेंस मेंटेन करना होता है. एंड एक दवाई है पेंटोथिनेट, कैल्शियम पेंटोथिनेट 500 मिलीग्राम, वो लेना होता है डेली. अगर वो 3 months to 6 months में इंप्रूव हो गया, देन इट्स फाइन. अदरवाइज उसका कोई बहुत ज़्यादा अभी तक
इतनी advancement नहीं है कि we can work upon it. Right. But there are certain lotions which definitely work, but the only thing is we need to know the cause. And in certain cases we don't even know the cause. इसलिए I feel कि जब आपको graying of hair होता है उसके बारे में आप stress ना लीजिए, color करवा लीजिए. Of course. है ना, because stress will again lead to more hair fall Right, and other kind right. of problems. If you've got any questions related to dermatology, Dr. Neha will answer them. And if you've got any question related to psychiatry and sexual health, since Dr. Ashish is an expert in that, he will answer that. Let us know in the comment sections and we'll get them answered by them. It's really amazing. So it was lovely talking to you. I think we'll move on to Dr. Ashish and we'll talk with him about the next phase of your story. Absolutely. Thank you yes. so much for your time. Was